हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयegi वसीम चैनल में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम Redmi 9 प्राइम में 1 घंटा फ्री फायर प्ले करेंगे। और गाइस यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि इसमें कैसा परफॉर्म रहता है, और साथ ही गाइस यहाँ पे बैटरी कितना ड्रेन होता है वो भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और आप अगर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। As you can see guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:05 यानी कि 11:05 हो रहा है। और गाइस यहाँ पे मैं बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 59% पे है फिलहाल। गाइस यहाँ पे हम गेम प्ले शुरू करेंगे अब। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। गाइस जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे वैसे ही 2 डीजे अलग हम गिव करेंगे। तो गाइस ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1000 तक पहुंचा दीजिए हमारे फैमिली को, फिर गिव होगा। और बाद में तो आगे और भी अच्छी अच्छी गिववेस आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे 600 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं आपके प्यार और सपोर्ट से। तो गाइस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे, और बस 1000 तक हमें पहुँचा दीजिए पहले।
लिटरली गाइज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि 10,000 में इतना अच्छा हमें फ़ोन देखने को मिल जाता है। गाइज इसमें हिलियो का G80 जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और गाइज मज़ा आ जा रहा है गेम प्ले करने में, काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है गेम, आप देख भी सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब स्पीड नहीं बढ़ाया गेम का ज़्यादा, ताकि आप खुद ही देख कर जज कर सकते हैं कि इसमें आपको लैग्स देखने को मिलते हैं या नहीं। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और मैं सच कहूँ तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा मुझे लगा 10,000 में। और फिलहाल अभी तो नार्जो का 20A भी आ गया है, 20 भी आ गया है। जो 20 है वो G85 के साथ आता है, बट वहाँ पे HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट वो फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस पे आया है। अगर आप HD+ से मतलब दिक्कत नहीं है आपको, तो आप सिंपली वो चूज़ कर सकते हैं इसके बदले में। बट आपको ओवरऑल मैं कहूँ तो ये फ़ोन काफ़ी दमदार देखने को मिलता है इस प्राइस में, मेरे हिसाब से तो यही आपको ख़रीदना चाहिए दोस्तों। तो देखते रहिए बस गेम को आगे तक, और मिलते हैं हम आपसे लास्ट में। It's gonna be too much. I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer.
तो दोस्तों यहाँ पे हम हो गए शहीद, बिकॉज न्यू फ़ोन में खेलने में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। और गाइज यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे हमारे पूरे हो गए और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:07 यानी कि 12:07। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बैटरी भी परसेंटेज भी दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज 45 है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया गाइज। Realme C3 में HD+ डिस्प्ले है, तो वो भी लगभग इतना बैटरी कंज्यूम करता है 1 घंटे में, और ये भी लगभग उतना, ये 1-2% का फ़र्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों फाइनली बात करें कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइज़ आपने देख लिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और गाइज़ बैटरी भी आपने देख लिया कि इसमें कितना अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाता है। गाइज़ इसमें फुल HD डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गेम खेलने के लिए, और साथ ही बैटरी भी अच्छी आपको देखने को मिल जा रही है 5000 mAh की। तो गाइज़ मेरे हिसाब से 10,000 में बहुत ही अच्छा ये फ़ोन है। हीलियो का G80 प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है। गाइज़ अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे हीलियो G90 वर्सेस G80 वर्सेस G70, मतलब G सीरीज़ को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन कितना फास्ट है। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, मतलब वो इसका इंतज़ार कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।